Assalamu alaikum everyone, welcome to another video. So I'm sorry I had to मुझे करना पड़ा वॉइस ओवर। तो मैं अपनी स्किन प्रेप कर रही हूँ। सबसे पहले ग्लो रेसिपी की जो है तीनों प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करनी है। मैंने फेशियल मिस्ट यूज़ किया है इनका, फिर ग्लो रेसिपी का जो है वो टोनर यूज़ किया है, एंड देन नाइसिनामाइड ड्यू ड्रॉप्स जो है वो मैंने यूज़ किए थे। तो दिस इज़ हाउ आई प्रिपेयर माई स्किन स्पेशली व्हेन इट्स ड्राई वेदर। तो उसके बाद बाकी का वीडियो जो है मैं बातें करके गुजारूंगी। I've been using this lately and I love this honestly. It works so well. ये जो भी आपको मेरी स्किन थोड़ी सी फ्लॉलेस लग रही है ना, थोड़ी सी इसी की वजह से लग रही है। Then this watermelon glow niacinamide dew drops. It's perfect. So after we're done with this, I'm going to apply my primer, and primer I'll be using this Milk makeup. Apply some foundation. Alright, so foundation, I'll be using this Beauty Blender Bounce, and the shade is, where's the shade? Did I find the shade? I don't know. Yeah, 220. I think that's the number, like, right? 2.20. That's what the number is. Well, I'll be using this, so there you go. Oh, this one palm goes all the way. Setting powder, I'll be using this Milk makeup. आज Milk makeup ये भी है। Actually सामने पड़ा हुआ था, but it's very nice. क्या कहते हैं उसको? Blur powder. मैं बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि बस मुझे सेट करना है, क्योंकि मुझे स्किन मेरी जो है ना वो ड्राई लगना शुरू हो जाएगी, जैसे पैचेस मेरी स्किन पे। So I'm not going to use like a lot of product. निकालना बड़ा मुश्किल है। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। आई यूज़ टू हैव एक पाकिस्तानी ब्रांड था कि मुझे ना यहीं बड़ा होगा वो, तो मेरे घर के पास एक स्टोर था। आई यूज़ टू बाय लाइक अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट। अभी कभी जाऊँ ना पाकिस्तान तो मैं उनसे मिलती हूँ तो उनको याद होती है, मैं कि ओ बाजी आप वापस आ गई। तो क्योंकि उन्हें पता है कि मैं उनकी जो है ना बड़ी लॉयल कस्टमर थी। अच्छा ये हो गया। राइट, सो मैंने जो अपनी आईब्रोज हैं वो मैंने ऑफ द कैमरा बना ली हैं क्योंकि मुझे बड़ी कन्फ्यूजन होती है, मैं नर्वस हो जाती हूँ। तो आई लाइक टू हैव दीज बुशी आईब्रोज बिकॉज उससे आप थोड़ा सा अपनी एज से बेहतर लग रहे होते हो। सो आई डोंट नो इफ़ यू एग्री विद मी बट आई थिंक सो। मैं उसको बहुत प्रोसाइज लाइक बहुत डार्क नहीं बनाती। आई मेक इट लाइक थोड़ा सा natural look, you know what I mean. So the palette I'm going to use this not Natasha, it's Huda Beauty Naughty palette. So this is my first time try this palette. Yeah, I bought it like 2-3 months ago, but I never tried it. So these are this is the palette. You might have seen like all over internet like crazy. People have been talking about this palette a lot. मैंने use नहीं किया, लेके रख लिया, तो अभी using this. You can imagine how lazy I am, like कहीं जा रहे नहीं ना रहे थे तो ज़रूरत भी नहीं पड़ रही थी कि मेरे गले को कुछ हुआ यार, pray for me. अच्छा जी, I'm gonna try like start using with the very lighter shade right here just to create my crease, and the shade is hypnotic. Okay, hypnotic. Alright, I'm gonna use this Morphe brush, so Bismillahirrahmanirrahim. Okay, just gonna use the same one. Wow. सारी आंख पे लगाऊंगी, ठीक है जी। तो आपने वैसे यूज़ करना है जैसे आपको तरीका लगता है अपनी आंखों के। मेरी आंख जो है ना वो यहाँ से मुझे थोड़ी सी लगती है ऐसे क्रीज आ जाती है, तो आई ट्राई टू कीप इट लाइक ऑन माई फुल आई ताकि मैं ऊपर जो शेड लगाऊँ वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आना शुरू हो जाए, ठीक है जी।
थोड़ा सा मैं और लगाऊंगी। आई डोंट नो आपको आवाज़ आज कैसी आएगी। कोशिश किया मैं माइक यूज़ कर रही हूँ, बट आई डोंट नो, लाइक यू नो कंप्लेन आ जाती है मुझे किसी न किसी की। राइट, ये मैंने पूरी क्रीज पे, पूरी आंख पे, पूरे लिड पे लगा लिया बेसिकली। क्या कह रही हूँ मैं? तो लुक एट दिस शेड, वाओ, रियली लाइक लुक नेचुरल। ओके, अच्छा उसके बाद let me think. Arouse. Okay, this is the shade Arouse right here. I feel like this shade is going to complement my outfit. So let's do the same brush. Dip it. And I'm gonna apply right here. Just to create a little depth in my, crease. Because I have like a little droopy eyes. Don't complain, very pigmented. I like it. Very good use किया मैंने कभी. अच्छा, मैं पता नहीं क्यों मुझे ना थोड़ी सी हेजिटेशन होती है बोल्ड आइज़ बनाने के लिए, पता नहीं क्यों। हालांकि आई लव वाचिंग वीडियोस, जिस जो भी ऐसे वो लुक क्रिएट कर रहे होते हैं ना, आई लव वाचिंग द वीडियोस। बट जब खुद का टाइम आता है ना, तो बोल्ड आई मेकअप के लिए आई जस्ट गेट अ लिटिल नर्वस। मुझे पता नहीं क्यों थोड़ी सी वो हेजिटेशन है बोल्ड आई शेडोज़ के लिए। ओके जी, मैंने ये लगा लिया बेसिकली। मुझे लगा कि मेरी आंख जो है ना वो ज़रा ज़्यादा फैलना फूलना शुरू हो जाए, सो आई ट्राई यूजिंग दिस। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। It's so uncomfortable. Wow, it's very uncomfortable. Actually, next I'm going to use this a little more darker shade right here. This मैं कोशिश करूँगी मैं एक ही पैलेट से सारे सब कुछ ना यूज़ कर लूँ. This is like Naughty. Okay, this is actually shade from this palette, Naughty. So कहाँ मेरा पित्तू सा brush ना, एक मैंने और कौन है, there you got it. This brush like right here is also from Morphe, छोटा सा ये. So I'll be using this in my outer corner. Ah, that's nice. Wow. That's good color. ये छोटा ब्रश मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि ये क्रेज़ के अंदर जाके ना सिर्फ क्रेज़ के अंदर रहता है. इट्स नॉट गोइंग लाइक ऑल द वे, हर तरफ. तो दैट्स व्हाई आई लव अबाउट दिस ब्रश. और मैं इसी काम के लिए इसको यूज़ करती हूँ. सी, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर. इट्स गोना स्टिक हियर. वाओ. अच्छा, ये जो डार्केस्ट शेड है इसमें स्पाइसी, आई बी यूजिंग दिस स्पाइसी, क्योंकि ये जो नॉटी है ना, ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं दे रहा मुझे राइट कॉर्नर में. तो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज जस्ट अ लिटिल बिट दिस स्पाइसी. Yeah, look at that. It does give that darker shade जो मुझे चाहिए कॉर्नर्स के लिए. Alright, I'm gonna use a clean brush ताकि मैं इसको blend कर दूँ. This is all, it's from Sigma E40 brush. It's clean. After this, let's remove that. Ooh, look at that. Shade is everywhere. Get a plain brush like this. This is from BH Cosmetic 103. Okay, I'm so excited about using this shimmer shade right here. This is Tantric. Okay, it's very glittery, very sparkly. Oh my god, I'm just so excited. I don't know ये brush के साथ लगेगा या finger के साथ लगेगा, because okay, let's try with the brush first.
Guys, wow, this is so good. This is so good. Okay, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही because it pops up like perfectly. ये करने के बाद मैं यही जो छोटा सा ब्रश मैंने अपनी क्रीज पर लगाया था, दिस वन अब आप यूजिंग लाइक ये जो शेड है नॉटी, ये मैं अपनी आईज की यहाँ लगा दूँगी. थोड़ा सा जो है मैं ये जो डार्कर शेड था स्पाइसी, ये थोड़ा सा इस ब्रश पे लूँगी और यहाँ ऐड करूँगी क्योंकि मुझे लगा कलर थोड़ा कम है मेरी आँख में. Yeah, that's nice now. It's good. अच्छा, इसके बाद मुझे अपनी आँख से जो थोड़ी सी ना वो खोलनी है, मेरी आँखें जो है ना वो चुनी चुनी है, तो चुनी चुनी आँखों को ठीक करने के लिए मुझे अंदर जो है वो कुछ लगाना है. So I'm gonna be using this eye pencil by MAC और इसका जो बेज शेड है ये मैं लगाऊंगी. See, मेरी आँखें कितनी जल्दी वाटरी. ओह गॉश. अच्छा, अब मैं जो मस्कारा और जो आईलाइनर है वो थोड़ी देर बाद लगाऊंगी जब तक ये पानी जो है ना मेरा कंट्रोल में आ जाता है. Right, so I'm going to be using the Xoxo bronzer. It's very pretty shade right here. तो हम ये यूज़ करेंगे. Let me just fix my nose. It's a big brush. Where's my nose brush? There you go. Okay. ज़रूरी नहीं आप ऐसे ही करें, ये बस मेरे ट्रिक्स हैं जो मुझे लगता है कि मेरा मुंह उसके बाद ठीक लग रहा तो मैं वो कर रही हूँ और जो मुझे आसान लगता है क्योंकि right now I'm not in mood to play with anything. अच्छा जी, I'm gonna use this Xoxo नहीं, let's use different shade. Is this the intense or what? I have a couple of shades. This one. I love this shade. I'm gonna use this. This is a Pillow Talk Cheek to Cheek Intense. Using my favorite highlighter. This is by Becca and shade is Opal. This is love. I love this one more than anything in makeup after lipsticks. Lipsticks will be number one fan. I can't change my mind about that. Okay, ये देखा, अब मैं लगाई जाऊंगी. I'm gonna go crazy. Done with the face. It's almost like done. Make sure you blend. Alright, I'm gonna use my I'm gonna done with my eyeliner. Alright, see, I'm done with my eyes. और मुझे ना वो मेरा eyelash curler नहीं मिल रहा, वो मेरी बेटी ने कहीं रख दिया बिकॉज उसको वो बहुत पसंद है, तो you know I'm just gonna go like that. लेकिन eyes are they look better. मैंने जो है वो Lancome का, let me just show you what I use. ये बेस और Estee Lauder के ये जो
है Supreme mascara, some what? Yeah, extreme mascara, volume mascara, whatever. Like ये दो चीज़ इस्तेमाल किया मैंने, और आईलाइनर मैंने टार्ट का यूज़ किया। ठीक हो गया। तो इसके बाद अब क्योंकि कलर मैंने, अब क्योंकि मेरा दिल कर रहा था थोड़ा सा मज़ीद कर्ल कर लूँ इनको, बट नेवर माइंड, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, राइट। अच्छा, अब लिप्स की जब बात आती है, मैं आई ऑलवेज गो फॉर लाइक न्यूड लिप्स। क्या तकलीफ है मुझे, तो मैं थोड़ा सा लुक को चेंज करना चाह रही थी। सो अभी यूजिंग लाइक अ लॉट ऑफ, लाइक मैं दो लिपस्टिक्स जो है अभी आपको सर्च करके दिखाऊंगी। एक मैं लाइटर यूज़ करूँगी और एक मैं अपना ब्राइट शेड जो मुझे पसंद है वो मैं यूज़ करूँगी। तो ओके, मैंने लिप लाइनर लगा दिया और ये मेरे पास इट्स अ गुची, व्हाट्स द शेड, Peggy Taupe number 9200 Gucci। ओके, अभी ये क्या लगा हुआ है इसमें? Okay, I'll be using it. Can you imagine lip liner I used is a Pakistani brand, Christine, and it's perfect, perfect with Gucci. I mean, like, isn't it insane? I love Pakistani lip liners, honestly. I'll show you my collection one day, so make sure you subscribe. So this is the look with the lighter lip shade. तो अभी जो है मैं थोड़ा सा जो है वो डार्कर शेड यूज़ करूँगी। डार्कर शेड जो है वो मेरे पास it's again Gucci, sorry, number 9190 is Myra Crimson, I think, मुझे नज़र नहीं आ रहा, but I will link it down below. This is my Valentine shade, so I'm gonna use that. Okay, and this is the next shade. Alright guys, this is my brighter shade, so please let me know in the comments down below which look you like the most, with the nude lips, I mean like pink lips, lighter color, or with the brighter color. I mean, so yeah, I hope you like the video, and please give this video a thumbs up and make sure you subscribe to my channel, follow me on Instagram. I really appreciate your support, so your feedback is very important to me, so make sure you comment me down below. So I'll see you guys soon. Thank you for watching. Bye.